This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए रब्बी हमारे पालने वाले, हमारे गुनाहों की माफ़ी बख्श और हमारी गिरिया उजारी तेरे हुजूर में कबूल कर। या हय्युल कय्यूम या अलीयुल अज़ीम, 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 या हय्युल कय्यूम या अलीयुल अज़ीम। अली अल्लाह तू ही तू है, 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 अली अल्लाह तू ही तू है। या रहमान या रहीम, 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 अल वदूद या रहमान, अल वदूद या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, अल वदूद, अल वदूद, अल वदूद, अल वदूद, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम,
या रहमान या रहीम या रहमान या रहीम अल बदूद अल बदूद अल बदूद अल बदूद अल अकरम अल अकरम अल अकरम अल अकरम अल अकरम अल अकरम अल बदूद अल बदूद या रहमान या रहीम 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 शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह शुक्रान लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अली मदद अजीज सर याली मदद याली मदद बहुत खूब सुभान अल्लाह बहुत नवाजिश thank you everyone for joining and Ya Ali Madad we will continue on our series of lectures on ilm wa amal today we will cover some of the questions that have been coming in from especially last two sessions of the Niyaz and Chanta and one from the our Dua Karani session. And inshallah, since these are the weeks or the month of Majalis, we will try to finish this on time. So our friends on the East Coast may have enough time to get to the Jamaat Khana to the Majalis. Once again, Yali Madad to all. Let's start with Imam's blessed name. Bismillahir Rahmanir Rahim. Noor Maulana Shah Karim Al Sani Hazir Imam. Hazir Imam. Ya Maulay Mehrban Madad Farma. Madad Farma. Ya Maulay Mehrban Madad Farma. Ya Maulay Mehrban Madad Farma. Madad Farma. Ya Maula Tawfiq Tahid हिम्मत व यारी मौला तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी मौला या मौलाए मेहरबान हमारे करीब आजा मौला या मौलाए मेहरबान अपने नूर से हम गरीबों की हिदायत फरमा मौला या मौलाए मेहरबान अपना दस्त मुबारक हम पर रख मौला हमारे करीब आजा मौला और करीब आजा मौला ताकि तेरे नूर की रोशनी में मौला हम ये इल्मी काम कर सके मौला या मौला मेहरबान मदद फरमा मौला मदद फरमा few questions we talked about the presence of the imam in the Jamaat Khana. In one of the session that imam is always present in Jamaat Khana. Do we believe that imam is always present in Jamaat Khana? Why this question? What kind of question is this? एक सवाल कि नाचीज ने एक सेशन में कहा कि इमाम हर हमेशा जमात खाने में हाजिर और मौजूद होता है और ये कैसा सवाल है कि क्या वाकईअन इमाम हर हमेशा जमात खाने में हाजिर और मौजूद होता है
क्या वजह है ये सवाल की? What is the reason for this question? I can tell you, if we truly believed that Imam is present in Jamaat Khana, if we truly believed, we would not do things that we do today. अगर हमारा ईमान होता कि इमाम जमात खाने में हाजिर और मौजूद है, तो हम कभी भी वो हरकतें ना करते जो आज हम करते हैं. If Imam is present in Jamaat Khana and if you believe, would you speak loudly? Would you talk and gossip and backbite? Would you run around? Would you laugh out loud in Jamaat Khana? That tells us that we say that Imam is present in Jamaat Khana, but truly, honestly, I don't think we believe it. I don't think we believe it. There is a lecture, old lecture of this Garib and Nachis. It's called Firm Belief. Firm Belief talks about this subject for about 20 minutes. That if we truly believed that Imam is present in Jamaat Khana, you would have didar of the Imam every single day. When we enter the Jamaat Khana, we say Hazinda, but do we believe it? And the reply is Kayam Paya. Do we believe it? Or do we just say it just for the sake of saying it without understanding and without believing it? That's a challenge to each one of us individually. In the question form, do we believe it? एक नाचीज का छोटा सा 20 मिनट का लेक्चर है, पुराना लेक्चर है, उसका नाम है फर्म बिलीव. उसके अंदर इस सवाल के ऊपर चर्चा की गई है, डिस्कशन है कि अगर वाकई हम ईमान लाए, यकीन करें कि इमाम जमात खाने में हाजिर और मौजूद है, तो फिर रोजाना ही हमें इमाम का दीदार जमात खाने में होगा. हम जमात खाने में दाखिल होते हुए कहते तो हैं है जिंदा, लेकिन क्या हम यकीन करते हैं? हम जमात खाने में दाखिल होकर जब है जिंदा कहते हैं, तो कोई हमें जवाब देता है कायम पाया, मैंने भी इमाम को जमात खाने में हाजिर और मौजूद पाया. लेकिन क्या हम इस बात पर यकीन करते हैं, या सिर्फ सच्ची सच्ची तौर पर ऊपर ऊपर से आदतन हम ये बोलते हैं है जिंदा कायम पाया? क्योंकि अगर हमारा ईमान होता तो जरूर हम इमाम को जमात खाने में हाजिर और मौजूद पाते और इमाम का दीदार करते. और ये एक जाती इनफिरादी सवाल है अपने आप से पूछने का. मैं आपको नहीं पूछ सकता, आप मुझे नहीं पूछ सकते हैं. ये जाती और इनफिरादी सवाल है जो हमें अपने आप को पूछना है.
कि क्या हम इस बात पर यकीन करते हैं या सिर्फ जबानी जबानी बोलते हैं। जी हाँ, इमाम जमात खाने में हर हमेशा हाजिर व मौजूद रहता है। देखें इमाम क्या फरमाते हैं और कुरान क्या फरमाता है। इमाम फरमाता है, मैं हर हमेशा आपके साथ हाजिर और मौजूद हूं। आप हमेशा मेरे ख्यालात में और मेरी दुआओं में है। कोई भी ऐसा सेकंड नहीं जाता जब इमाम आपके साथ हाजिर और मौजूद नहीं है। ऐसा कोई वक्त नहीं है। ये इमाम का फरमान है। कुरान क्या कहता है इस बारे में कि चाहे मशरिक हो चाहे मगरिब हो, वो हर जगह पर हाजिर और मौजूद है। तुम जिस तरफ भी नजर करोगे तुम्हें नजर आएगा। तो फिर सवाल होगा कि हमें क्यों नजर नहीं आता है। तो उसका जवाब वही होगा, क्योंकि हमारा ईमान नहीं है। हम इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि इमाम जमात खाने में हाजिर और मौजूद है। आप जिस तरफ भी नजर करेंगे आपको वो नजर आएगा। और कुरान के अंदर आगे एक लाइन है, वो ये है कि वो हर चीज को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो हर जगह पर मौजूद है और आपको देख रहा है। वो हर चीज को जानता है और हर चीज को देखता है। किस तरह से जानता है, किस तरह से देखता है? क्योंकि वो हर जगह पर आपके साथ हाजिर और मौजूद है। ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 115 है। तो आपने फरमान को सुना, आपने आयत को सुना, और आपने इस बात पर यकीन किया कि इमाम हाजिर और मौजूद होता है जमात खाने में। वरना आप क्यों बोलते हैं है जिंदा? और वो क्यों जवाब देते हैं कि मैंने भी इमाम को हाजिर और मौजूद पाया। अब आप जब जमात खाने जाएंगे, अभी थोड़ी देर में जाएंगे हम मजालिस के अंदर, और जब हम कहेंगे है जिंदा, तो ऊपर ऊपर से जबानी जबानी ना बोलना, ईमान लाते हुए यकीन करते हुए बोलना। और जब आप जवाब देंगे कायम पाया, तो ईमान लाते हुए यकीन करते हुए बोलना। Today, when we go to Jamaat Khana, and we are about to go to Jamaat Khana in an hour or so, then when you enter the Jamaat Khana, and if you believe Imam is present in the Jamaat Khana, then with that belief, say Hai Zinda. And the answer would be Kaim Paya. I have also found him present and living in the Jamaat Khana. Second question came from Amar of the Imam. In our Niyaz session, we talked about that Niyaz is created and performed with the Amr of the Imam. When we say Farman and the reply Ya Ali, Ya Muhammad, the water itself is not a Niyaz. It is with the Amr of the Imam it becomes Niyaz. Niyaz, blessing, barakat. With the Amr of the Imam, it becomes Abe Shafa, the water that would cure, purified water. With the Amr.
Again, the reason we do not pay attention because we do not have the knowledge of these things. We do things by default, by automatic, without giving a second thought, without understanding what is happening. So when we say Farman, we say Yali Madad without understanding. Ilm and then Amal. Remember? Ilm and then Amal. We learn, we know, then we practice. So when it is said Farman, meaning with the Farman, with the Amar of the Imam, then with the understanding, you reply with the Amar of Ali and Muhammad. Why Ali and Muhammad? Because Imam Zaman is Ale Nabi, Aulade Ali, the Noor Nabi, Noor Ali, with the Amar of the Imam Zaman. आप समझ गए कि जब हम न्याज के वक्त ये कहते हैं फरमान और जमात जवाब देती है या अली या मोहम्मद, तो हम ऊपर ऊपर से सोचे बिगैर, जाने बिगैर, इल्म के बिगैर करते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि न्याज खाली पानी है और कुछ भी नहीं है जब तक के इमाम का फरमान अमर उसमें शामिल ना हो। तो आखिर में हम क्या कहते हैं? फरमान, इमाम का अमर शामिल है इसमें। अब ये आपके लिए बरकत का बाइस बनेगा, नियाज। अब ये आपके लिए शिफा का बाइस बनेगा, आब शिफा, क्योंकि इमाम का अमर आ गया है। और आप जवाब देते हैं या अली या मोहम्मद। या अली या मोहम्मद क्यों? क्योंकि इमाम आले नबी औलाद अली है। इमाम नबी और अली का नूर है। तो हम कहते हैं कि इमाम के फरमान के साथ, अमर के साथ, अब इस न्याज को पियो ताकि तुम्हें बरकत भी हो और शिफा भी हो। ये है अमर of the imam. Now in other places also the amar of the imam plays a great role. For example, dua karwani. For example, chanta. For example, other places where Mukhi Sahib says khana vadan. Each one of those comes with the amar of the imam. इमाम का अमर सिर्फ नियाज में नहीं, दुआ करानी में भी है, छांटे में भी है और दूसरे मकामत पर भी है। जहां जहां मुखी साहब फरमाते हैं खाना वदान, वहां पर इमाम का अमर शामिल होता है, यानी कि वो इमाम के अमर से फरमाते हैं खाना वदान। जिस तरह से दुआ के आगाज में बिस्मिल्लाह, मुखी साहब जो अमर, अमर हाजिर इमाम जो। You see, every place whenever Mukhi Sahib says Khana Vadan, the Amar of the Imam is included. An example, at the beginning of the dua, when the reciter asks for the permission, when Mukhi Sahib says Bismillah, he says, with the order Amar of the Mukhi. And Mukhi Sahib replies, no, start with the Amar of the Imam. You see, without the Amar,
of the Imam, nothing is started or established. इमाम के अमर के बगैर ना तो किसी चीज का आगाज होता है और ना ही कोई चीज बनती है, चाहे वो दुआ हो और कोई काम हो, गुनाह की बख्शानी हो, नियाज हो, छांटा हो, सब का सब काम इमाम के अमर के साथ होता है, क्योंकि वो साहिब अमर है. Nothing gets started or established without the amr of the Imam, as he is the Sahib Amr in total control of things. Without his Amr, nothing gets started or established. The third question. That question comes with the Amr of the Imam for the Mukhi and Kamriya Sahib. Again, sadly, unfortunately, sometimes we see the Jamaat disrespecting Mukhi Sahib, Kamriya Sahib. If I was in your place, that would be the last thing I ever would do. कभी कभार बहुत ही गमगीन बात है कि हम मुखी कामड़िया की वो इज्जत नहीं करते जो करनी चाहिए, और हम मुखी कामड़िया को जज करते हैं. And sometimes we say they are wrong. Sometimes we judge them. Sometimes we disrespect them. That is very sad part. Very, very sad. Mukhi and Kamriya are the Amr of the Imam in the Jamaat Khana. Mukhi Sahib and Kamriya Sahib are in the seat, in the place of the Imam in the Jamaat Khana. Disrespecting Mukhi Kamriya is just like disrespecting the Imam Zaman. That is the big thing. Disrespecting Mukhi Kamriya is just like disrespecting Imam himself, because they are on the seat with the Amr of the Imam Zaman. मुखी कामड़े की इज्जत ना करना ऐसा है जैसा इमाम की रिस्पेक्ट ना करना, नौज़बिल्ला. क्योंकि मुखी कामड़िया इमाम की जगह पर, इमाम की सीट पर, इमाम की गादी पर जमात खाने में इमाम के अमर के साथ बैठे हुए हैं. And there is no time ever we should say Mukhi Kamriya were wrong. It's just like saying, God forbid, Imam was wrong. We should never do that. मुखी कामड़े को कहना कि वो गलत है, ऐसा है नौजबिल्ला कि हम कहें कि इमाम गलत है, और हमें इस बात से गुरेज करना चाहिए, और कभी भी ये बात अपने जहन में भी नहीं लानी चाहिए, जबान पर भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वो जमात खाने में इमाम के अमर के साथ है. रिस्पेक्टिंग मुखी कामड़िया is very, very important, because after all, it is the Mukhi Kamriya's request which forgives your sin. It is Mukhi Kamriya's request to the Imam Zaman. When you go to Mukhi Kamriya and say Tobo Tobo, Mukhi Kamriya says, request Imam for you,
they become intercessor between you and the Imam Zaman. You need that intercession. You need that medium. It is due to the request of the Mukhi Kamriya that Imam forgives your sin and sent his blessing on you. How do we disrespect Mukhi Kamriya? ये तो मुखी कामड़िया ही की सिफारिश है जिससे हमारे गुनाह मौला इमाम ज़मान माफ करता है। ये मुखी कामड़िया वो हमारे लिए जरिया है जिसके जरिए से इमाम हमारे गुनाहों को बख्शता है। हमें इस सिफारिश की जरूरत है। हम कैसा उसकी डिसरिस्पेक्ट इज्जत ना करें, कैसा मुमकिन है ये? मेरे ख्याल में ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि मुखी कामड़िया जमात खाने में इमाम की जगह पर उसके अमर के साथ उसकी गादी पर बैठे हुए हैं। It is essential for us to understand that Mukhi Kamriya are sitting in the seat of the Imam with the Amar of the Imam, and we must respect them. Must. There is not ifs and buts and choice. There is no question. Regardless of how much you like or dislike. कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका क्या नजरिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नजरिया अच्छा है या बुरा है, मुखी कामड़िया की सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो इमाम के अमर के साथ उस गादी पर बैठे हुए हैं आपकी सिफारिश करने के लिए। दे आर सिटिंग देयर फॉर यू so they may request the Imam Zaman to forgive you. There was a sub question in this question, and that was, and I believe this was asked before, when we go to Mukhi Kamriya and say Tobo Tobo, do we look at here? Do we look at there? Do we try to find Mola Baba's picture? Do we look up? Do we close our eyes? No. You look at the Mukhi Kamriya straight in his eyes. Mukhi Kamriya are in the seat with the Amar of the Imam. Would you turn your face away from the Imam Zaman? No. Logical. No, we don't. If Mukhi Kamriya are sitting in the place of the Imam, why would you close your eyes and turn your face away from them? You look right in the eyes of Mukhi Kamriya, just as you would look at the face of the Imam. Believe, 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 and then ask. Remember, ilm and then amal. Knowledge, understand, and then practice. We do not do just because my parents told me or somebody else doing it, so I'm doing it. No. Learn, 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 ilm, 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 and then practice. इल्म पहले, अमल बाद में, समझ पहले और क्रिया बाद में। तो जब आप देखेंगे कि इमाम की जगह पर मुखी कामड़िया बैठे हुए हैं, तो आप अपनी नजरें इधर उधर नहीं करेंगे,
आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे, आप ऊपर नहीं देखेंगे, नीचे नहीं देखेंगे, सीधा मुखी कामड़े की तरफ देखेंगे, क्योंकि वो इमाम की जगह पर जमात खाने में बैठे हुए हैं. Along with that, the respect for others in the jamaat khana. Respect for others in jamaat khana. Very important. I remember our sister was asking in one of our session earlier that these people do this people do this, they are loud, they are laughing out loud. Respect for others. Let me give you a farman again. Imam says, I look at you through momin's eyes. मैं तुम्हें मोमिनों की आंखों से देखता हूं. Another place Imam says, अल्लाह मोमिनों की आंखों से तुमको देखता है, हमेशा देखता है. If that is the case, Imam is looking at us through the Mu'mineen. How would we disrespect others in the Jamaat Khana? Because Imam is looking at you through their eyes. If you are disrespecting them and Imam is looking at you, you are literally disrespecting Imam. Be mindful of that. Be mindful of that. आप ध्यान रखें इस चीज का कि इमाम आपको देख रहा है, कभी मुखी की आंखों से, कभी मोमिनों की आंखों से. आप इस बात पर ध्यान रखें. ना तो आप मुखी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना ही किसी और की डिसरिस्पेक्ट करेंगे. रिस्पेक्ट फॉर मुखी कामड़िया, respect for others in Jamaat Khana. If they are loud, if they are talking out loud, they are speaking out loud, they are laughing out loud, if it's disturbing you, no need to disrespect them. Move away. Go find yourself a corner where you can sit and do your tasbih. Come early into Jamaat Khana and sit in a corner and do your tasbih. Now let's turn this table other way around. What about if it is you, by your loud talk, loud laugh, you are also disrespecting others because you are disturbing their ibadat, their tasbiyat, their giriyawzari. You are disturbing their intentions. So disrespect goes two ways. We will never disrespect others, and not only that, we will never disturb others. So we could be on this side or we could be on that side. We could be on the giving side or receiving side of this disrespect. And we will not do that. We will not talk loud. Why? Remember, Imam is Hazir and Mojud present in Jamaat Khana. हम कभी भी जमात खाने में जोर जोर से बातें नहीं करेंगे, कभी भी जमात खाने में जोर से हंसेंगे नहीं, बल्कि हम ध्यान करेंगे कि हम जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर नीचे कोई बैठकर मोमिन तस्वीर तो नहीं कर रहा है, हम उसको हम उसको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर रहे हैं. और अगर कोई जोर से बातें कर रहा है और हमें डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उसको जाके डांटेंगे नहीं, हम वहां से हट जाएंगे. नो रीजन फॉर डिसरिस्पेक्ट.
We will not do that to them. And if they are doing it to us, we still will not disrespect them. We will not get angry with them. We will move. Regardless of you are at the receiving point or giving point, we will be mindful of that. चाहे हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं या कोई हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हमें आराम से सुकून से गुस्सा किए बगैर ध्यान करना है कि किसी को हमसे तकलीफ ना हो, और अगर हमें कोई तकलीफ दे रहा है तो खामोशी से हम वहां से चलते बनेंगे. Gossiping and slandering is another way of disrespecting. Do not get involved, indulge yourself in the gossiping and slandering of others, especially in Jamaat Khana. Let me tell you what we are doing. So, when you gossip, you are sinful. When you gossip, you are including one of your friend, one of your family member, one of your Jamaati member in your sin. And those others who sitting behind you, in front of you, they are also listening to you. Not only you are committing sin for yourself, you are also giving sin to all of those people around you. I beg you not to do that. We come to Jamaat Khana for purification. We do not come to Jamaat Khana to collect sin. God forbid, not only we are committing sin, we are including others in this sinful act of gossip. I don't know where this disease has come to Jamaat Khana, and this disease has taken roots. This disease has taken root in our Jamaat Khana. Gossiping has become part of our daily action in Jamaat Khana. So sad. So sad. Not only we are becoming a sinful, but we are involving our friends, our family, and our Jamaat in this shameful act. Shameful act. Shameful act. We should not do that. Be mindful of this. Respect others. This come in the part of others' respect. पता नहीं ये बीमारी कहां से आ गई है हमारी जमात में. अफसोस के साथ कि जमात खाने में बैठकर गिला गिबत करना और किसी की बुराई करना, ये हमारा डेली का सेवा बन गया है. पता नहीं कहां से आई है ये बीमारी हमारी जमात के अंदर. रोजाना ही हम देखते हैं, और ये तो रोजाना ही का काम हो गया है. अब जमात खाने आकर किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना, किसी पर तोमत लगाना, किसी को बुरा भला कहना, डेली की प्रैक्टिस बन गई है हमारी. खुदा हमें इस बीमारी से बचाए. ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे अंदर आ गई है, पता नहीं कहां से, और हम इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं. सो सैड. वेरी शेमफुल एक्ट. वेरी वेरी शेमफुल एक्ट. ना सिर्फ हम खुद गुनहगार होते हैं, अपने फैमिली मेंबर, अपने दोस्तों को, अपनी जमात को भी इस गुनाह के अंदर हम शामिल कर रहे हैं. हम जमात खाने में आए थे गुनाह की बख्शानवी के लिए, और गए गुनाहों की पोटली लेकर. मौला ने एक जगह पर फरमाया कि देर आर थ्री काइंड ऑफ पीपल जमात दे कम्स टू जमात खाना. वन हु कम्स एम्प्टी हैंडेड and leave empty handed. Others come empty handed and go home with the bundle of sin.
And third comes to Jamaat Khana, empty handed, but they go with the bundle of blessings. Which one are we? Who are we in these three examples? Are we the one who come empty handed and leave empty handed? Or are the one who come empty handed and leave with a bundle of sin? Or are we the one who comes empty handed and leave with a bundle of blessings? Which one are we? Which one would you like to be? Be mindful of that. The last question. In our previous session, I made the comment during the chanta session that our tariqah is the tariqah of logic and intellect. And our tariqah requires follow up, requires action, requires practice. We cannot just learn ilm and then don't follow through. We cannot drink niyaz and then not follow through. We cannot ask for forgiveness and then not follow through. We cannot listen to the farman and not obey the farman. We cannot take the chanta and not follow through. We cannot say our dua, tasbih, giryauzari, and not follow through. Our tariqah requires learn, listen, understand, and then practice, follow through. आप समझ रहे हैं इस बात को? हमारा तरीका हमारे से डिमांड करता है कि हम जो सीखते हैं, समझते हैं और कहते हैं, फिर उस पर अमल भी करें। उस पर अमल भी करें। जब आप कहते हैं कि मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूं, तो फिर आइंदा से गुनाह ना करें। जब हम दुआ पढ़ते हैं और कहते हैं कि या मौला मैं तेरी इत्ताअत करता हूं, तो फिर इत्ताअत करें। इल्म और अमल साथ में है। खाली इल्म सीखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये बातें हमने सुन ली, एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इल्म और अमल साथ साथ में है। Ilm and practice are together. Without the practice, ilm does not work. So, what are the correct formation? Learn, understand, and then follow through. Practice. क्या किस तरह से है? पहले सीखे, फिर उसको समझे, फिर उस पर अमल करें. That is our tariqah of logic and intellect. It requires us to follow through. Otherwise, just listening and learning and not following on the Sirat al Mustaqim. In our dua, we say, Ya Mola, guide me on Sirat al Mustaqim. Right? So, Imam guides you on Sirat al Mustaqim, but you are sitting on Sirat al Mustaqim. Literally, you said, Ya Mola, guide me on Sirat al Mustaqim. Mullah Papa is walking in the front. But we don't follow through. We are sitting on Sirat al Mustaqim. Doesn't make any logic or sense. Does your intellect accept that? Requires follow through. When you say guide me to Sirat al Mustaqim, then you should be walking on Sirat al Mustaqim. Why would you say guide me on Sirat al Mustaqim if you're gonna sit on Sirat al Mustaqim? Another example. And last example, then I will stop for comments or question. When we say, Ya Mola, give me
hakiki ilm, hakiki samajh. Right? In our dua we say, give me hakiki samajh. So Imam gives you hakiki samajh by giving you ilm, farman, dua, guidance. So now you have hakiki samajh, but then you don't utilize that. You don't utilize that hakiki samajh. Why would you even ask for hakiki samajh if you're not going to utilize it? If you're not going to follow through? Makes no sense. No logical sense. Right? एक तरफ से हम कहते हैं कि या मौला तो हमें हकीकी समझ दे, फिर जब इमाम हमको इल्म देता है, समझ देता है, तो फिर हम उसके ऊपर चलते नहीं है, तो फिर मांगते क्यों है भाई? आपने मौला को कहा मुझे हकीकी समझ दे, मौला ने आपको इल्म दिया, आपको हकीकी समझ दी, फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बात तो कोई नहीं हुई कि आपको मौला ने कुछ दिया फिर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये क्या बात हुई? हमारा तरीका रिक्वायर करता है कि हम जो मांगते हैं फिर उस पर चले भी। हमको इमाम ने गाइडेंस दी है तो उसके ऊपर चले, हमको हकीकी समझ दी है तो फिर हम उस पर अमल करें, उसको इस्तेमाल करें, वरना क्या फायदा है इल्म का और हकीकी समझ का। So let me stop here. Thank you for great questions. Keep sending your question because without your question we cannot do this. This requires two-way communication. Ji. Subhanallah, sir, Subhanallah. So we pray to Mawla that, when we leave Jamaat Khana with a lot of blessings, not with the sin. Ameen. Ameen. Okay. Friends, please share your questions in the chat, or you can use the hand raise feature to ask question. So we don't have any question in the chat at this time. Friends, you can unmute your device or use the hand raise feature. If you don't have a comments or question, we can close early so we can get ready for Jamaat Khana. Friends, any comments, any question, anything you'd like to ask or add? Okay, Kamre Sahib, should we stop? याली मदद Ya Ali Madad. सर शुक्र सर आज आप जो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स का जो सिखाया ना सर उससे बहुत 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 मतलब समझ आया सर। अब इतना इल्म के बाद भी है ना कभी कभी और भी ज्यादा हम जजमेंटल हो जाते हैं अननोइंगली कि जैसे अपने को पता है तो फिर अपने को और ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा ऐसा क्यों हो रहा। लेकिन जैसा आप आज समझाए कि वो भी सोचना भी अपन सामने वाले की रिस्पेक्ट को वो कर रहे तो जी, वो हमको और उसमें मतलब उसमें और स्ट्रांग बनना है कि थॉट्स में भी हमको नहीं करना और जैसे आप सिखाते कि दुआ करना वो लोग के लिए तो हाँ, इस पे इंशाल्लाह अमल करेंगे। और एक चीज हाँ। ये थी सर कि इल्मुल यकीन से अगर ऐनुल यकीन में जाना है जल्दी से तो कैसा करना चाहिए सर, क्या करना चाहिए? हाँ, आप यकीन करें कि जो इल्म आपको दिया जा रहा है, जैसा एग्जाम्पल दी गई, कि आप यकीन करें कि इमाम जमात खाने में हाजिर और मौजूद है। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि इस इल्म के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी आंखें खुलने लग जाएंगी और आप एनुल यकीन के मकाम पर पहुंचेंगे। उसका आगाज कहां से होगा? आपके ख्वाब में होगा। पहले आपके ख्वाब बदलने लग जाएंगे, आपके ख्यालात में होगा। पहले आपके ख्यालात बदलने लगेंगे, फिर आपको जमात खाने में दीदार होने लगेगा। इसका आगाज ख्वाब से, ख्याल से और फिर जमात खाने से होगा। जी। सर एक एग्जांपल दो ना ये ख्वाब और ख्याल का।
आपके जब आप इल्म को समझते हैं, किसी का फोन अनम्यूट हो गया है। जब आप इल्म को समझे, इस तरह से ये मिसाल दी हमने कि जमात खाने में इमाम हाजिर और मौजूद होता है। जब हम उस पर पूरा यकीन रखते हैं ना, तो हमारे ख्वाब के अंदर हम देखते हैं कि हम जमात खाने गए हैं और हमको इमाम जमात खाने में नजर आते हैं। इसका आगाज ख्वाब से होता है पहले, फिर हमारे ख्यालात में आता है ये कि जब हम जमात खाने जाएंगे तो वहां पर हमको इमाम हाजिर और मौजूद मिलेंगे। और जब हम है जिंदा कहते हैं तो हमारे ख्याल में होता है कि जब मैं कहता हूं है जिंदा, तो सामने इमाम हाजिर और मौजूद खड़ा हुआ है। फिर आस्ते आस्ते हमारी आंख खुलने लगती है और वाकईअन हम जमात खाने के अंदर इमाम को हाजिर और मौजूद पाते हैं। ये 3 दर्जात है, 3 स्टेप्स है इल्मुल यकीन के, जो फिर बदल जाते हैं ऐनुल यकीन में। जी, Thank you, sir. Shukar Ali Allah. Thank you so much. शुक्र मौला, शुक्र मौला। So we have a question. So when you talk about the khayal in the dreams, so friends asking, can it be khayal first in dream? Sure, why not? But normal trend is the dream first. But yes, if your khyal is stronger, then why not? Yes, that is possible. Hopefully, if your khyal is stronger than your dream, then your dream will verify your thoughts, because you need a verification, right? That what you are thinking is correct. And that verification will come in your dream. G. Yali Madad Missionary Sahib, Ya Ali Madad. Anwar Sahib. Um, just a little bit of clarification, maybe a technical point. When we go to Jamaat Khana, Mukhi Kamadia's eyes are representing Imam's eyes. And I've always been, told that, you do not look at Imam's eyes directly, you lower your gaze. So when we are doing chanta, do we look at Mukhi Kamaria's eyes directly, or do we just look at the face and lower our gaze? That's my I question. would recommend to look at his eyes directly. What you are saying that I see Imam in you. That's what you're saying by default without saying it. That I see Imam in you. Of course, if Imam was present physically, it would be hard for us to look at him directly. But do you remember in one of the session a few weeks ago, someone had asked question that sometime during the didar, we see people look at the imam one time and then they close their eyes. And I said, don't do that. You want to observe imam's didar as much as possible. But yes, if you are face to face with the imam, it would be hard to see directly into his eyes. Then, as a respect, and it would be not even possible to do it, you would lower your eyes. That would be correct in that time. But in here, the statement that we are making, that we see Imam in you. So to see, we have to keep our eyes open. Gee, that is the logic behind my saying. Gee, Yalim Dai, sir. Ya Ali Madad. Uh, that was a very beautiful explanation of the etiquettes and respect for Jamaat Khana. And I just remember a wise man saying that if you go to Jamaat Khana, that is an extremely big blessing from the Hazar Imam. And once you understand that, then you don't want to miss the blessing, because coming over there morning or evening,
you are specially selected by him and to get his blessings and have a great day or a great evening. Just a Subhanallah. thought. And Subhanallah. G. So, Jesus, sir, we have a few more minutes. Friends, please unmute your device if you have any questions. Uh, one more question. I went to a funeral recently, and it was quite packed, and I was sitting on a chair. There was no other space. There was salawat going on for the for the Ruhani's benefit. Everybody was reciting salawat. There's two people behind me were chatting away. I had no way of getting up because there was no space anywhere else. So what do I do in that case? They were chatting away, chatting away, chatting away all the time, and it was quite distractful. So in that case, what does one do? What would I do? Hmm. I would get up and stand somewhere rather than sitting there because it's not benefiting me in any way because I cannot concentrate on Salwat, right? So I would just get So up and stand somewhere rather than sitting there. Azim, I think you got muted. okay, thank you. Yes, that's what I would do. Yeah. I'd rather stand somewhere else than sit there. If I cannot concentrate, what is the use? I would not disrespect them, or get angry So with them or anything. Yeah. so you would So not that is draw their the way, attention. remember the two-way disrespect? They were actually disrespecting you and your intention. But I would not suggest you to disrespect them. So what do? You just get up and go somewhere else. But I mean, how if I drew their attention, then would that be a disrespect? I would talk to them nicely and say, this like to concentrate on the salwat because that's what's going on right now. Is that a disrespect, you think? Uh, it may not be, depending on who they are. I can give you an example. In our Jamaat Khana, we have a couple of really, really old people. Uh-huh. I guess they don't get to talk to anyone all day long. So when they come to Jamaat Khana, just chatting away, chatting away. So if I would go and tell them, even though I may be right by telling them you are in Jamaat Khana, why don't you concentrate? But to them, they would be disrespectful because they are older than me, right? Yeah. So, so I rather, what do? I just move away, go sit somewhere else. Hmm. Yeah. Okay. And let Mola be the judge, right? Hmm. Yes, Okay. yeah. Thank you. It would be nice if this kind of talk would be given in the Jamaat Khana regularly. Hopefully, not 100%, maybe 50% people will be mindful of this, because it's not told, you know, constantly reminder, people Hmm. forget, and that is unfortunate. Yeah. Yeah. Okay. All right. Thank you. Ali Madad, sir. Ya Ali Madad, Ya Ali Sorry, I Madad. missed quite a bit because of echo. I don't know if you discussed this one, but sometimes I get disturbed in Khane during Bangi because someone is doing tasbih. Not too sure what to do at that time. Move away. It's very difficult. And sometimes There's it's nothing. extremely loud. I'm not too sure what our protocols are, but Yeah, that's the only free will you have. That is to move away from it because there is no other recourse. If you know the person, so first of all, in ibadat, you're not supposed to use your tasbih. mhm, Okay? If you're talking about literally tasbih, somebody just going.
you know, Yeah. and that can be disturbing. If you know who that person is, instead of saying, "Oh, you are making so much noise, you are disturbing me," you could say, You know, you're not supposed to use tasbih in ibadat, right?" And if they said, "I'm gonna use it," and you just say, "Oh, I'm sorry, I just wanted to tell you that, but it's okay. Keep using it. I'm okay with it," and go away and just find your own place. Yeah. It's Again, I think unfortunate. again, I hope this kind of things are taught and reminded regularly, maybe once every 3 months or 6 months in Jamaat Khana, etiquettes of Jamaat Khana, not talking out loud, you know, don't disturb others, whatever. If those were normal talk given maybe every 3 months, 6 months, you know, hopefully some of the people will become mindful of that. When we don't say anything, it becomes a norm and then it becomes a practice. G. Oh, thank you. G. So we don't have any questions. You want to end the session? We can end the session over here, sir. G. Thank you, Kamle Sahib. Thank you everyone for joining us. Yali Madad. Yali Madad. Yeah, Ali Madad, and thank Yani you. Mother, thank you. Yali Madad. يعني مدى Yali Madad.